electronic configuration. So student, now we will discuss the important topic of our second chapter, electronic configurations. Electronic configurations. Electronic configuration, that is, we have to fill the electron. We have to fill electrons in different subshells and different orbitals. For that, we have to understand some basic rules. One of the rules is that Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. This rule states that an orbital accommodate maximum two electrons with opposite spin. This rule states that an orbital can have maximum two electron with opposite spin. This represent electron moving in one direction, whether clockwise or anti-clockwise, and this represent also movement of electron in orbital. So if I say an orbital can accommodate two electron, which means one of the electron moving in orbital will be in clockwise direction and other will be in anti-clockwise direction. That is the most important thing. One of the electron that will move in orbital in clockwise direction and other will move in anti-clockwise direction. So these can be represented by this. This sign does not mean clockwise. मतलब इसे आप ऐसे समझोगे कि ऐसा नहीं कि ये वाला साइन क्लॉकवाइज को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और रिवर्स भी इसका ट्रू है. इसके बाद में हमारा जो सेकंड रूल है, द सेकंड रूल इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल. This is simply not a rule, but we have to understand it. It states that electron enters in different orbitals from lower energy levels to higher energy level. I will understand this topic once we are doing with the examples. And the third rule is Hund's rule of third rule is Hund's rule. This rule states that electron pairing in different orbitals of same subshell will not take place until
until each orbital until each orbital singly filled, until each orbital is singly filled. We will understand these three principles. We have to remember these three principles while we are doing with the electronic configuration. I will remember, or I will explain these rules once we are doing with the electronic configurations of different elements. Now we will start from the energy level diagram. We will start with the electronic configuration of the different elements. We will start with the electronic configuration of different elements. So while doing this, we have to study an important rule which is called Bohr Rule. This is a very important rule which is called Bohr Rule. Which is called Bohr's Rule. It states that the orbitals will be filled first. Sorry, it states that subshells slash orbitals, it states that subshells will be filled first whose n plus L value is lowered. Whose n plus L value is lowered. For example, if I say from 2s and 2p, which of the subshell will be filled first? So now for 2s, value of n represent 2, and for s, L is always 0. For 2p, value of n is equal to 2 and value of L is equal to 1. So by Bohr rule, n plus L for 2s is equal to 2, n plus L for 2p is equal to 2 plus 1 is equal to 3. N plus value for 2s is lowered, so out of 2s and 2p, 2s orbital will be filled first. Out of 2s and 2p orbital, 2s orbital will be filled first. That is the example of Bohr's rule. It states that the sum of n plus L must be lowered to fill the electron first in the particular subshell. Now for 3s, 3p, 3d and 4s, we have to pick which of these subshells will be filled first. We have to, before studying this, we have to study for one orbital. For 1s orbital, value of n is equal to 1, L is equal to 0, n plus L will be 1 plus 0 is equal to 1. That means electrons will start pairing. Will be filling from
one s orbital will be filling from one s orbital, or you can say that electron will start in filling from s subshell, which is one subshell. Now we have to make a series according to which we can say that electron filling can takes place. We have to make up a series by which we can conclude that electron filling can takes place. I told you lowest possible energy level is 1s orbital. Then for for n is equal to 2, for n is equal to 2, I have L values 0 and 1. L represent 0 for s and 1 represent for p. 2p and 2s. Out of 2p and 2s, I told you n plus L value is 2, n plus L value is 3. So 2s will be filled first prior to 2p. So the series, we can say series or energy levels increases from 1s orbital, then 2s orbital and 2p orbital. So after that value of quantum number will be 3. For n is equal to 3, value of L will be n minus 1. Firstly we put n is equal to 1, we get L is equal to 0. Then we put n is equal to 2, we get L is equal to 1. Then we put n is equal to 3, we get L is equal to 2. So n is equal to 3, that represent 3s orbital, because L value is 0, n value is 3, that represent 3s orbital. L value is 1 and L value is 3, that represent 3p orbital. Then we will go n value 3, L value 2, that represent 3 orbital. And we can also take another subshell 4s. इसको मैंने एक बार वैसे ही ले लिया एक्सप्लेन करने के लिए. तो क्वेश्चन है, आउट ऑफ 3s, 3p, 3d and 4s, which will be filled first? We can check it by n plus L rule. We can check it by n plus L rule. For 3s, value of n is 3 and value of L is 0, that means n plus L is equal to 3. For 3p, value of n is equal to 3 and value of L is equal to 1, that means 4. For 3d, value of n is equal to 3 and value of L is 2 is equal to 5. But for 4s, value of n is equal to 4 but value of L for s is equal to 0. That means out of these 3d orbital will be filled at last. So after 2p, 3s orbital filled. Then because we know that 3p and 4s have same value, but principal quantum number for 3 is lower, so that will be filled first. After 3s there will be 3p orbital filled, and after that 4s subshell filled, and after that 3d subshell can fill. This is the series you have to remember. We can make electronic configuration up to 30 elements. Rest will we do in the offline classes, and I will explain the further series of that. You can also explain the further series simply by n plus L. Now you have to remember this series, and now we will start the electronic configuration. आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, इसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो समझा दी जाएगी. Now we will start how to fill the electrons. In this series. How to fill electrons in this series.
You have to remember 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, and 3d. And you have to remember these things. S subshell can have one orbital and can accommodate two electrons. P subshell have three orbitals, can accommodate six electrons. And you have to remember also D subshell have five orbitals. That means 10 electrons can be filled in it. So if I start the proceedings for the electronic configuration, the first element is hydrogen. It has one electron. So electronic configuration, the one electron will be filled in the 1s subshell. So it can be represented as 1s1, and we can fill only one electron in that way. Now in helium there are two electrons, so it can be filled as 1s2. Now the full orbital of 1s can be filled. If the signing of one electron is in upward direction, the second will be in lower. That means two electrons have opposite spin. You can write it as well this or this, but we cannot write this way, or we cannot write in this way. This is a totally wrong. Now we have filled the electrons in 1s2 shell. That means in hydrogen there is one electron, that is 1s1 electron, and in helium there are two electrons, that is 1s2 electrons, and two electrons have been filled in the first orbital. Now we have lithium, three electrons. So how we can write it as 1s2 totally filled, 2s1. The next shell is 2s. So in 2s, the third electron will go in the 2s shell, and we can write it as 1s2 and 2s1. Next is beryllium, 4 electrons. We can write it as 1s2, 2s2. That means both the subshell will be filled completely. Now boron, carbon, and nitrogen. You have to write it very carefully. There are 5 electrons in boron. I write in 1s there is 2 electrons, in 2s there will be 2 electrons, and 2p there will be 1 electron. So I can write it as 2 electron over here, 2 electron over here, and 1 electron over here. It may be 2x, it may be 2y, it may be 2pz. That means electron can be having in any of the orbitals. You can say, you can write it as well in this way, and you can write it in this way also. But now in carbon there are 6 electrons, so that is why we can write it as 1s2, 2s2, and 2p2 electron. That means in 1s orbital there will be 2 electrons, in 2s orbital there will be 2 electrons. Now there is a rule which states that Hund's rule. Now you cannot simply put electron in that manner, because these three orbitals have same energy. So electron pairing will not take place until all the orbitals of 2p subshell is completely singly filled. So that is why we cannot write it as instead we can write it in that manner. That means two orbitals will be singly filled. Now अगर नाइट्रोजन की बात की जाए 1s2, 2s2, 2p3. So we can write it as 1s2, 2s2, 2p3. We cannot write 2p2 just as I said earlier. This explained by the Hund's rule. What it states? It states that electron pairing will not take place until each orbital of subshell is completely filled. Because सबसे पहले अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक में फिल करेंगे, अगर दूसरा तो उसको दूसरे ऑर्बिटल में, अगर तीसरा तो उसको तीसरे ऑर्बिटल में. हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 2p2 है तो उसे एक में लिख दिया, अनलेस वो सिंगली फिल्ड नहीं है. नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन. नेक्स्ट वी हैव
oxygen. Next we have oxygen, 8 electrons, 1s2, 2s2 and 2p2, sorry 2p4. Now the oxygen is 8 electrons, that is 1s2 electron, 2s2 and 2p4. So we have to write it as first 3 electrons will be filled and the fourth electron will be paired in the one of the orbitals of 2p. So representation will be in that manner. From oxygen there will be fluorine, there are 9 electrons, we can write it as 1s2, 2s2 and 2p5. So it can be represented as 1s2, 2s2 and 2p5. We can pair it, and now in case of neon, we have to fill the electrons, in the same manner, For example, neon 10 electrons, 1s2, 2s2 and 2p6. That is why we can write it as 1s2 totally filled, 2s2 totally filled and 2p6 is also totally filled. 2p6 totally filled. Now neon is noble gas and a stable species and stable gas. So up to 10 electron system we can use 1s orbital, 2s orbital and 2p orbital. So next we will start from sodium. If I say sodium, there are 11 electrons. If I say sodium, there will be 11 electrons. I cannot write sodium like this. 2p6 is filled totally. Now the next shell is 3s. 3s can be filled. For simplicity, I have to replace these by neon, because 1s2, 2s2, 2p6 filled. यहां तक अगर फिल हो चुका है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नियॉन को. किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नियॉन को. तो मैं सिंपली अगर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं उसे कैसे लिखूंगा? सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद मैं कैसे लिखूंगा? नियॉन के बाद में कौन सा शेल आता है? 3s1. उसके बाद में द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम. So simply I can write as 12 electron. Up to 10 there will be neon and the next shell is 3s2. Now the next one is aluminium. There are 13 electrons in it, so I can write it as again neon, up to 10 neon, then 3s2 and 3p1. The next subshell is 3p1, so I can write it as 3s2 and 3p1. Now silicon, 14 electron, up to 10 neon, 3s2 and 3p2. Again we have to fill the singly orbital first, we cannot pair it. After that there will be phosphorus, 15 electron, so I can write it as neon up to 10, 3s2, 3p3. Now again we will reach up to the sulfur. In sulfur there are 16 electrons, so we can say up to 10 there is neon, then 3s2 and 3p4, because s orbital can accommodate only 2 electrons. 10 plus 2 12, the rest there are 16, 4 will be in 3p cell. So how we can write it as? We can write it as 3s2 and 3p4. Each orbital will be filled singly, then again pairing 3p4. The next is chlorine, 17 electrons, so we can write it as neon, 3s2 and 3p5. 3s2, 3p5. The next is the noble gas, argon. आर्गन जो होती है नोबल गैस होती है, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नोबल गैस है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है. जो ऑक्टेट वगैरह रूल्स है वो केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे, वो
वो आपको मैं तब समझा पाऊंगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 16। हाउ वी कैन राइट इट एज up to 10 there will be neon and after 3s2 and 3p4. The next one is chlorine. So chlorine, how can we write it as? We can write it as neon 3s2 3p5. And how we can write argon? We can write it as 18 electron system, neon 3s2 and 3p6. That means octet is complete. So what is octet? We will study in the chemical bonding chapter. So up to 18 electron system, यहां तक तो हमारा नियॉन बन गया था। यहां तक क्या बनेगा? आर्गन बनेगा। क्या बनेगा? आर्गन बनेगा। तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं पोटेशियम की लिखूंगा तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? फिर मैं आर्गन से लिखना शुरू करूंगा, जैसे मैंने सोडियम में किया था। सोडियम को मैं कैसे लिखने लगा था? सोडियम को मैंने शुरू किया था नियॉन से। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पोटेशियम. Potassium, how we can write potassium's electronic configuration? This is a very important. The 12 next elements are the most important to have electronic configuration. यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है. So in potassium there are 19 electrons. How we can write it as? We can write it as up to 18. There is an argon electronic configuration. The next shell was 4s shell. So 4s1, that means हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद में क्या आता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? 20। तो कहां तक लिखेंगे मैं? आर्गन 18 4s2, दैट मींस देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद में ना हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो डी ब्लॉक मेटल होता है उसे बोलते हैं स्कैंडियम। इसे Sc से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके? 21 होते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अप टू आर्गन there are 18. So next shell is 4s. 4s2 is totally filled and the next shell is D. The 21st electron will be in D cell. So we can write it as 4s2 and 3d1. अब ना एक बात समझनी बड़ी जरूरी है कि 4s और 3d में who get filled first? मैंने आपको अभी बोला था n+l रूल से। क्या बोला था? n+l रूल से। जिसका n+l की वैल्यू लो रहेगी तो उसको मैं पहले ज्यादा फिल करूंगा, जिसकी n+l की वैल्यू लीस्ट होगी उसे मैं ज्यादा पहले फिल करूंगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो n की वैल्यू कितनी होती है 4, l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका सम कितना आ गया? n+l 4। अगर मैं इसकी बात करूं n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, उसका सम कितना आ गया 5। दैट मींस 4s विल बी फिल्ड फर्स्ट। और एक बात और थी आपको बताने की, अगर मैं 3d और 4s के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन फिल भी फर्स्ट कहां पे होंगे? फर्स्ट फिल भी कहां में होंगे? 4s में। कहां पे होंगे? अगर हमने रिमूव कराने हैं तो रिमूव भी कहां से होंगे? 4s से होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं एनर्जी लेवल की तो 4s का एनर्जी लेवल कहीं यहीं पे होगा और 3d का यहां पे होता है। ये तब है जब 3d वेकेंट है। ये तब होता है जब 3d वेकेंट होता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हो जाते हैं तो इसका एनर्जी लेवल फिलिंग करने के बाद 3d 4s से काफी ज्यादा नीचे आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फिल्ड भी 4s सब शेल में सबसे पहले होते हैं और हमें रिमूव करने पड़े तब भी वो 4s सब शेल में सबसे पहले होते हैं। तो इसके बाद जो डी सब शेल है वो शुरू हो चुका है स्कैंडियम से। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन मेटल्स भी बोले जाते हैं, वो +2 का टॉपिक है, डी एंड एफ ब्लॉक। सो फर्दर देयर विल बी वनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। It can be represented by T, maybe Ti, I'm not sure. 22, how can we write it as? Argon up to 18 there will be argon and 4s2 and 3d2. We can write it as that manner. So after that vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt. For vanadium there are 23 electrons and we can write it as argon 4s2 3d3, 4s2 3d3.
अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। अगर क्रोमियम की मैं बात करूं तो 24 इलेक्ट्रॉन हुए, तो हमें लिखना क्या चाहिए था कि आर्गन तक तो 18 हो गए, 4s2 और 3d4, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारी केमिस्ट्री बोलती है कि अगर ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो और फुली फिल्ड हो कोई भी ऑर्बिटल, तो उसे स्टेबल माना जाता है। अगर हाफ फिल्ड हो और फुली फिल्ड हो तो उस ऑर्बिटल को क्या माना जाता है, उस एटम को क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। क्योंकि क्रोमियम के पास 4s2 और 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या करते हैं कि वहां का अपना 1 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के केस में एस डी को डोनेट कर देता है, तो ये क्या बन जाता है 4s1 और 3d5, 4s1 और 3d5 बन जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिमेट्री बन रही है हाफ फील्ड की। क्या बन रही है? सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री की वजह से और एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, सिमेट्री की वजह से और एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वे अपनी जगह पे तो रहते नहीं, ये मूवमेंट करते रहते हैं। अगर ये मूवमेंट करेंगे और हाफ फील्ड है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां जा सकता है, फिर यहां पे भी जा सकता है, फिर यहां पे भी, फिर यहां पे भी, दैट मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किधर भी जा सकता है। अगर उनके पास जाने को स्पेस होगी, अगर उनकी गिनती भी ज्यादा होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है उनकी मूवमेंट में। अगर मूवमेंट में ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो स्टेबल हो रहे हैं। इसके अलावा जो मैग्नीज है उसे हम एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे 25। यहां से यहां पे क्या था, अब इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, ऐसे मैं लिखूंगा आर्गन तक कितने होगी 18, देन 4s2 20 एंड देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द d subshell, so it can be represented as 4s2 and 3d5, 4s2 and 3d5. This is again a very important. So now further these two will be important. Iron 26 electron, up to 18 there will be argon, then 4s2, then 3d6. You can simply fill 2 electrons over here and 6 electrons over here. Firstly you have to fill the electrons by जैसे आपको फिल करते हैं सिंगली फिल्ड करोगे। देन इसके बाद में आता है कोबाल्ट, उसका कितना होता है 27, तो आर्गन तक 18, 4s2 20, 3d7, और अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि मेरे को तो पता ही था यहां तक ही फिल होने हैं, तो मैंने पहले इसे फिल कर दिया था। लेकिन आप क्या करोगे, पहले 5 फिल करोगे, उसके बाद इसे फिल करोगे, उसके बाद इसे फिल करोगे। तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 एलिमेंट और हो जाते हैं। उसके बाद हमारा ये टॉपिक है जो वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के बाद। सो आफ्टर दैट देयर विल बी निकल, कॉपर एंड जिंक. Zinc is 30, copper is 29 and nickel is 28. I can write it as argon 18, 4s2 20 and 3d8. So you can simply write it in that manner, 4s2 3d8. Then again there is a mystery. तो इसे होना तो ऐसे चाहिए था आर्गन 4s1 और 3d9। तो मैंने आपको अभी लिखाया कि ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल। तो ये क्या कहेगा कि तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। आना क्या चाहिए था 4s2 और 3d9। ये क्या करेगा, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे, तो ये क्या बन जाएगा 4s1 एंड 3d10। 3d10 मींस ये जो डी सब शेल है वो फुली फिल्ड हो चुका है। और इसके बाद में जो जिंक है तो उसे हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, आर्गन तक 18, 4s2 20 और 3d10। अब इसको भी फिल्ड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बंद कर दे पुत्रों।